Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me your social science teacher student. So students, in the previous video we have completed up to Ramakrishna Paramhans, right? So today in this video we would like to start Swami Vivekanand. So you all have heard the name Swami Vivekanand because he is the legend, you can say that. He is a very well-known person in India and out of India also. In the foreign country also he is most popular, iconic person, students. So let's begin and know some details about the Swami Vivekanand. Okay. A Bengali graduate named Narendra Nath Dutt, 1863 to 1902 CE, came into contact with Ramakrishna Paramhans, who reciprocated his quest for knowledge. Narendra became a disciple of Ramakrishna and became an ascetic, means sannyasi, later acquiring the name Swami Vivekanand. He did an intensive study of the Indian and Western philosophy. So students, Swami Vivekanand was a Bengali graduate and his real name is Narendra Nath Dutt. Later on, he is known as Swami Vivekanand. So he had gone contact with Ramakrishna Paramhans, and with the help of Ramakrishna Paramhans, he got a lot of knowledge. Reciprocated means knowledge, and then Narendra means Swami Vivekanand was devoted to Ramakrishna Paramhans, and from the disciple he became sannyasi, and later on he had studied about the Indian and Western philosophy a lot, students. Swami Vivekanand advised people to serve the poor and look for God in needy people. मीन्स स्वामी विवेकानंद जी ये कहते थे लोगों को कि पुअर जो गरीब लोग हैं उनको सर्व करो, उनकी हेल्प करो और गरीब लोगों के अंदर ही भगवान को देखो. He imbibed pride for our rich cultural heritage and faith in a bright future in the Indian youngsters. मीन्स ही imbibed मीन्स वो अब हमारे जो हिंदू और इंडियन संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, वो सारे इंडियन यंगस्टर्स में वो देखते थे. बिकॉज यंगस्टर्स आर द ब्राइट फ्यूचर, लाइक यू स्टूडेंट्स, you all are our bright future, right? And then he had also attended the Parliament of the Religions in Chicago in United States in the year 1893 CE. मीन्स उन्होंने पार्लियामेंट गए थे, वो शिकागो गए यूनाइटेड स्टेट्स में, and he had given an incredible speech over there. He provided understanding about the Indian philosophy and culture. He propagated the Indian culture by touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan, and etc. So students, he had gone a lot of countries, we named them Europe, Egypt, China, and Japan, and he had introduced there about the इंडियन कल्चर. मीन्स वो वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ में जाके इंडियन कल्चर्स को रिप्रिकोट करते थे. मीन्स वो रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को एज अ इंडियन culture, as in he is become an Indian idol, you can say that. He was an ardent supporter of the Indian culture and devout nationalist. He gave the legendary slogan to the Indians, "Arise, awake and stop not till the goal is achieved." So उन्होंने वो बहुत ज़्यादा ही इंडियन कल्चर के सपोर्टर थे और वो बहुत नेशनलिस्टिक थे. अपने देश के लिए कुछ भी वो कर सकते थे, एंड उन्होंने सबसे बड़ा और इनक्रेडिबल स्लोगन दिया था इंडियंस को कि जागो, अराइज, उठो, जागो, पर कभी भी स्टॉप मत होना जब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव ना कर सको. सो दिस स्लोगन कैन बी डिवोटेड टू यू स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज जब तक आपके ड्रीम्स, जब तक आपके गोल्स अचीव ना हो तब तक यू शुड हैव टू गो फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, स्टूडेंट्स. ओके. Swami Vivekanand established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE in the name of his Guru. So, Swami Vivekanand's Guru was
Ramakrishna Parahams, right? So then later on he had established a Ramakrishna mission in the name of his guru, and their headquarters at Belur. You have heard that about there is a place over here in Calcutta, Belur Mutt, and that is a popular main headquarter. This mission adopted the ideals of service to mankind through various works. The mission followed the slogan service to man is service to God. सो ये जो मिशन रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया था उन्होंने उसमें सबसे बड़ा मेन सर्विस ये था कि उनको सर्विस लोगों को सर्विस दो, तो आप भगवान को सर्विस कर रहे हो, मतलब आप भगवान की देखभाल कर रहे हो। आपको पहले लोगों की देखभाल करोगे आप, तो उसी में आपको भगवान दिखेंगे। एंड बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, दिस मिशन ओपन स्कूल्स अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन. Hospitals were run by the mission to help the people in need. Even today, the branches of the mission are functional in India and abroad. So students, what later on gone ahead, that these missions have opened a lot of schools over there in entire nation for education. And then afterwards, later on, they have established hospitals also to the needy people who are need the help. And even right now also in India or in abroad also in the foreign countries, they are having a lot of particular branches, you can say a lot of mission schools, Ramakrishna mission schools, that are helping the needy people a lot, students. Okay, so this were about the Swami Vivekanand. You can see the picture of Swami Vivekanand. So there would be the answer, students, that what was the real name of Swami Vivekanand. So you know it right now, Narendra Dutt. Narendra Dutt was the real name of Swami Vivekanand, students. Okay, now we will talk about Reformation movements in the Muslim community. In the early 19th century, social and religious reforms were initiated in Muslim community under the leadership of people like Haji Sarayatullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Rai Bareli in Uttar Pradesh. They were motivated by the preachings of the religious leader Shah Wallahi Luha of Delhi. They believed that the Britishers could establish their rule in our country as the Islam in India was becoming weaker and corrupt. They started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it purer. So students, the topic is that Reformation movement in Muslim community, right? So in the early 19th century, there was very much inhabited that in the Muslim community, like the popular leaders which have been written, Haji Sayyidullah, then Sir Syed Ahmad Khan, they were the leaders and they were the preachers of the religious Islam. And they were motivated a lot of people to communicate and transfer into the Muslim community. So they believed that if the Britishers would establish their rule in our country, means in India, so at that time, if the Britishers would rule in India, so Islam in India would become weaker. They would be weak, and at that time the Islam was very literally weaker and corrupted. You all know that जो घूस लेते हैं, that calls as corrupted. So at that particular time, Wahhabi movement have been started, and when the Wahhabi movement have been started, the Islamic religion and their culture become purer, means वो साफ होने लगा, pure होने लगा. Many Muslims started acquiring English education due to the impact of Wahhabi movement and the growing influence of the Western culture. However, due to the orthodox nature of the ulema, a large number of Muslims remained deprived of the English education, social awareness and reforms. That is why the education of Muslims and the subsequent rise of the middle class was not satisfactory. So students, at that time many Muslims have acquiring English education because of the Wahhabi movement.
ओके। सो वहाबी मूवमेंट की वजह से बहुत सारे इंग्लिश एडुकेशंस होने लगे और बहुत वेस्टर्न कल्चर्स को प्रायोरिटी मिलने लगी। एंड देयर वाज अ पर्सन who was very much orthodox nature, a lot of orthodox nature. Now you will ask me that what is an orthodox? Orthodox, you can say, students, that the person who will by hook or by crook never changed about any religion. They would be religionistic way, and that person could be known as, or that type of thinking could be known as orthodox. Means कभी भी वो लोग जो कभी भी किसी की चीज़ के लिए, किसी के लिए अपनी नेचर को ऑर्थोडॉक्स ही रखेंगे, दे वॉन्ट बी चेंज इन बाय एनी हाउ, if that would be bad or if that would be good, he will not change their mentality, you can say. So a lot of Muslims were not deprived, they were not helping the person who was doing the English education, so they were lot of orthodox nature people there. And at that time the education of Muslims were very much arising in the middle class family, and that was not satisfactory. It means they were not so popular at that time. Then afterwards, Sir Syed Ahmad Khan was born in an aristocratic family. During the revolt of 1857, he was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company. मतलब जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तब सर सैयद अहमद खान ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थी, मतलब वो वहाँ पे काम करते थे और वो बहुत वफादार थे उस कंपनी के। तब 1869 में वो रिटायरमेंट हो गया, उनको रिटायर कर दिया गया और वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें सीखे। उसके बाद जब वो वहाँ से आए तब इंग्लिश एडुकेशन की इम्पोर्टेंस उन्हें पता चला। तो जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड रखते थे कि मतलब वो मुस्लिम ही हैं तो उन्हें मुस्लिम की ही स्टडी करनी चाहिए और कोई नॉलेज होना ही नहीं चाहिए, ऐसे ऑर्थोडॉक्स नेचर्स के बहुत लोग थे, बैकवर्ड नेचर के, यू कैन से। देन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने एक मैगज़ीन स्टार्ट किया जिसका नाम था तहज़ीब उल अखलाक। What is it? Tehzib ul Akhlaq in 1870 CE. Then he established the Aligarh Muslim College in 1875 CE, which is known as the Aligarh Muslim University. Nowadays, it is known as Aligarh Muslim University. He translated the book of English literature and science in Urdu language. उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में उसे चेंज किया and tried to make the Muslims familiar with the branches of knowledge from the West. He opposed the well system, means burqa pratha and child marriage, and educated education for girls and widow remarriage. मतलब उन्होंने अपने वहाँ पे कल्चर्स में जो बुरखा प्रथा था, जो मुस्लिम्स में अभी भी है वो बुरखा प्रथा, उसको बैन करने का बहुत ट्राई किया, चाइल्ड मैरिज हटाने का और गर्ल्स को एडुकेशन, गर्ल्स को पढ़ाने का, और वीडो रीमैरिज भी ज़रूर करवाना चाहिए ही चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट सिख कम्युनिटी। The reforms of the 19th century also influenced the Sikh community. Shiromani Gurudwara Prabhankarak committee was formed with an objective to reorganize the religious practices and remove the evil practices from the gurudwaras, to impart English education along with the religious education to the Sikhs. Khalsa College in Amritsar was established along with many other schools. So students, in 19th century Sikh community, जो पंजाबीज़ community है, वो बहुत ज़्यादा influenced थे। वहाँ पे उनकी कम्युनिटी बनी हुई थी जो गुरुद्वारा में जो भी इविल प्रैक्टिसेस और जो भी ख़राब चीज़ होती थी उन सब को ख़त्म कर दिया गया था। एंड वहाँ पे सिख्स को, मतलब सिख लोगों को पढ़ाने के लिए एक कॉलेज बनाया गया अमृतसर में जिसका नाम था खालसा कॉलेज, और वो उसके बाद बहुत सारे स्कूल्स वहाँ पे बने गए और सिख कम्युनिटी एजुकेशन में आगे हुई। Now we will talk about Parsi community. The Parsi youngster who had acquired English education established Rahnuma-e Mazdayasni Sabha
in 1851 for socio-religious reform movements, and Dada Bhai Navroji was the leader of this Sabha. This Sabha had started a periodical, namely Rashtra Goftar. It gave an impetus to the reform movements and carried out work for awakening of the Parsis. K.R. Kama and Behramji Malhabari also contributed in the socio-religious reform. Kama laid emphasis on the propagation of education and Malbari emphasized on women empowerment. They opposed child marriage and encouraged widow remarriages. Due to the efforts of Malbari, the government passed a law fixing the minimum age for marriage in 1891 CE. So students, Parsi community. आप लोग ने सबने सुना होगा Parsis. So the Parsis youngsters were actually very much devoted to English education, and then he established Rehnuma-e-Mazdaisi Sabha in 1851, and there was the main leader was Dada Bhai Navroji. So that Sabha's main leader was Dada Bhai Navroji. You can see the picture over here, students, right? And he was truly awakening the Parsis. वो पारसीज लोगों को बहुत जागरूकता दे रहे थे, और ये सभा में एक राष्ट्र गुफ्तार करके एक पीरियोडिकल नेमली स्टार्ट हुआ, जिसमें लोगों को वो जगाते थे और अपने जो भी मूवमेंट से रिफॉर्म से उसके बारे में बात करते थे. देन K.R. कामा एंड behramji मलबारी ने भी कंट्रीब्यूट किया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में, मतलब सोशली लोगों को जागरूक करना, उनको पढ़ाना, ये सब चीज़ों के रिलेटेड. देन जो कैमा थी उन्होंने एडुकेशन के रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम किया, और जो मलबारी थे वो वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वुमेंस के जो इम्पोर्टेंस थे, वुमेंस के जो राइट्स थे, उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा काम किए. एंड उन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी कम करने का किया और विडो री मैरिजेस के बारे में भी ज़्यादा इनकरेज किया. एंड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मलबारी, द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ लॉ फिक्सिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज. सबसे मिनिमम एज क्या हो सकती है मैरिज, इसका गवर्नमेंट ने लॉ पास किया 1891 CE में, स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ज्योतिबा फुले. Jyotiba Phule was a well-known social reformer of Maharashtra. He started a school for girls in Pune in 1857 CE. He helped the widows to remarry. He challenged the authority of the Brahmins in the society. He established the Satya Sodhak Samaj in order to inculcate confidence, courage and enthusiasm in people. So students, Jyotiba Phule was very much well known for social reformers. महाराष्ट्र में वो बहुत पॉपुलर थे. उन्होंने पुणे में गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन की थी 1857 CE में, और उन्होंने जो विडोज़ थे उनको हेल्प किया था फिर से शादी करने के लिए, इंथुजियास्ट सपोर्ट किया था. उन्होंने इस्टेब्लिश किया था सत्य शोधक समाज, जहाँ पे कॉन्फिडेंस, करेज और एंथुजियाज़म लोगों को सिखाते थे, उनको हैप्पीनेस देते थे, करेज करते थे आगे बढ़ने के लिए. सो नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ज्योतिबा फुले in your textbook. There are pictures, so if you will read this chapter one more time after completing this video, that would be helpful to you students. Okay, now we will talk about Thakkar Bappa. So Thakkar Bappa's contribution as the head of the Akhil Hind Harijan Sangh established by Gandhiji was very valuable in the upliftment of the untouchables, Harijans. He worked tirelessly to provide relief to people affected by natural calamities. Amritlal Thakkar, popularly known as Thakkar Bappa, was born in 1869 CE in the city of Bhavnagar. He remained a dutiful and devoted servant of the people throughout his life. He was an engineer who left his lucrative job to serve the downtrodden and marginalized people after being inspired by Gandhiji.
सो स्टूडेंट्स, ठक्कर बापा का जो कंट्रीब्यूशन है वो अखिल हिंद हरिजन संघ में हेड थे, जिन्होंने गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था। उस टाइम में जो अनटचेबल्स जो हरिजन्स थे उनके बारे में जो लो कास्ट वाले थे बहुत सही नहीं था। सो उस टाइम में ही ऑल्सो गॉन एंड हेल्प द पीपल अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज़। सो ठक्कर बापा's फुल नेम वॉज अमृतलाल ठक्कर and he was born in 1869 CE in the city of Bhavnagar, and he was truly devoted as a devoted servant of the people. He was actually having a degree of engineering की डिग्री थी उनके पास, बट उन्होंने वो अपना काम छोड़ के देश में लोगों की भलाई के लिए वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और वो इंस्पायर हुए थे गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी ने भी बहुत सारी लोगों की हेल्प की है, मदद की है। देन ठक्कर बापा ने पंचमहल भील सेवा मंडल स्टैब्लिश किया, जिसमें भील्स लोग वहाँ पे रहते थे और डीप फॉरेस्ट और हिली एरियाज़ में वो लोगों की हेल्प करते थे। जो ठक्कर बापा और उनके जो फॉलोवर्स थे वो फ्रीड करते थे भील्स को, और वो लोग एडिक्टेड होते थे अल्कोहल से और इविल कस्टम से और सुपरस्टिशन से, अंधविश्वास, उन सब से जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे उन सबको फ्री करते थे। तो इसलिए उन्होंने एक स्कूल ओपन किया था भील चिल्ड्रन के लिए, जो भील जो लोग शराब जैसे जिसको बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं उन लोगों के बच्चों के लिए। देन ही टॉट देम हाउ टू ऑपरेट अ स्पिनिंग व्हील, जो खादी जिससे बनता है, गांधी जी स्पिनिंग व्हील वो उनको वहाँ पे सिखाते थे, और उन्होंने स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी स्टार्ट की थी जिसमें वो लोग काम भी करते थे। As time passed, awakening and nationalism spread among people, which connected them better with the freedom movement. Gandhi ji's emphasis upon the removal of the untouchability improved the condition of people from the backward classes. सो जिस तरह टाइम चलता गया ऐसे लोग जागरूक होते गए, और वो लोग एक फ्रीडम मूवमेंट के साथ बढ़ते गए, कोऑपरेट होते गए, गांधी जी के साथ लोग बढ़ते गए, और ऐसे जितने भी अभी हम लोग ने बातें की, वो ठक्कर बापा, देन स्वामी विवेकानंद जी, ज्योतिबा फुले एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग सबके साथ कोऑपरेट हुए और उन्होंने अपना काम जारी रखा और इंडिया को एट लास्ट फ्रीडम प्रोवाइड किया। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो और ये चैप्टर अब हम लोग ख़त्म करते हैं, बिकॉज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी क्लियरली। सो in the next video I will come with a new chapter of chapter 2 in social science semester 2 students. Okay students, so till there I will see you in the next video. So stay home and stay safe. With the help of this line I would like to pack up. So bye bye.